मु आरंभ करिया पई आमर एठारे थिबा अतिथिवृंद मानकु कहिबि जे दीप प्रज्वलन करी कार्यक्रमटा आरंभ करिवे। मुख्य अतिथि डॉक्टर जस्टिस डीपी चौधरी, मुख्य वक्ता श्री स्वपन दास गुप्त एवं आमर मंचर आजिकर कार्यक्रम मंचर सभापति डॉक्टर क्षितिभूषण दास, शिशिर साहू आमर पूर्वतन कार्यकर्ता शिशिर साहू एवं डॉक्टर देवेश शंकर होता स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एबीवीपी पूर्व ओडिशा, सुश्री दीप्तिमयी प्रतिहारी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा। हाँ मैंने आगे कही ना देवे श्रद्धांजलि देवे सीटा कहीदेव समस्ते देवे एक जो मैंने मंच आसे ठीक है से देवे आपा जनकर परिचय करूँ संबर्धना करने गोटे राज्य सभापति गोटे राज्य सभा कौन कही परिचय कर राज्य सभापति संबर्धना करेंगे कह बाकी मुझे मैनेज कर ठीक है। राज्य सभापति अच्छा वर्तमान आम गहन रे उपस्थित थिबा अतिथि महोदय मानक परिचय करने को जाउची। आजिकार कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर जस्टिस डीपी चौधरी, पूर्वतन अध्यक्ष ओडिशा कंज्यूमर कमिशन एवं पूर्वतन न्यायाधीश ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट एवं वर्तमान लिंगराज कमिटी अध्यक्ष मध्य। मु तांकु संबर्धना करिया पई आमर स्टेट प्रेसिडेंट देवेश भाई को अनुरोध करी। आमे समस्ते करतले देई तांकु संबर्धना जणाइबा। दीप्ति तो मुख्य वक्ता आजिकार कार्यक्रम मुख्य वक्ता होचंदी मिस्टर स्वप्न दास गुप्ता। से एकाधारे वरिष्ठ सांबादिक, वरिष्ठ स्तंभकार, पूर्वतन राज्यसभा सांसद। से जड़े राष्ट्रवादी सांबादिक, तांको कलम रे देशर हित पहि ही चले। हिंदुत्व रो प्रवर्तक, अतीतर से आमर एबीवी रो राष्ट्रीय अधिवेशन रे उद्बोधन मध्य देइथिले। तांको योग्यता और गुणवत्ता जगु राष्ट्रपति तांको राज्यसभा को मनोनीत करथिले एवं 2015 मसीह से पद्म भूषण रे भी सम्मानित होइथिले। तांको सम्मानित करिया पई दीप्ति भौणी को अनुरोध करिवे हमर राज्य संपादिका उत्तरीय एवं पुष्पगुच्छ दे सम्मानित करिवे। आजिर कार्यक्रम सभापतित्व करछन्ती डॉक्टर क्षितिभूषण दास, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड एवं ता सहित
इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च रो से नेशनल फेलो मध्य थिले एवं एटा पाइबारे सारंकर से थिले द्वितीय ओडिया मानक भितर द्वितीय व्यक्ति से थिले आउ एनसीटी रा चेयरमैन मध्य थिले तांकु संबर्धित करिया पई मो आशा भौणी कहबी देवेश सर को कहबी से सम्मानित करिवे। शिशि सर अन्यतम आमर अतिथि होचंदी शिशिर साहू भाई जे कि आमर पूर्वतन राज्य संपादक थिले एवं पुरातन कार्यकर्ता दृष्टि शिशिर भाई को बसाई जे कि कृष्ण भाई स्मृतिचारण करेंगे। बर्तमान से 4टी डोमेन रे काम करुचंदी गवेषणा अनुसंधान स्टार्टअप एवं युवकों को आत्मनिर्भरशील कलिया काम करुचंदी एवं ओडिशा आंध्र और छत्तीसगढ़ रो विभिन्न विश्वविद्यालय रे उपदेष्टा भाव में अच्छा तांको सम्मानित करिया पई दीप्ति भौणी को अनुरोध करी से तांको पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय दे सम्मानित करेंगे। डॉक्टर देवेश शंकर होता स्टेट प्रेसिडेंट एबीपी ओडिशा पूर्व एवं करंजिया ऑटोनोमस कॉलेज रे बर्तमान अध्यापना करुचंती। तांको सम्मानित करिया पई अजय राउत भाई को अनुरोध करी तांको पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय दे सम्मानित करंतु। तांको साइड रे बसचंती सुश्री दीप्तिमयी प्रतिहारी स्टेट सेक्रेटरी एबीपी ओडिशा पूर्व तांको सम्मानित करिया पई हमर अर्चना भौणी अर्चना सतपति को अनुरोध करी से पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय दे के सम्मानित करेंगे। ए कार्यक्रम टी एवं आग को नापी मु क्षितिज सार को अनुरोध करी से एठा को आसबे। देवेश शंकर होता डॉक्टर। हाँ नमस्कार आज ये कार्यक्रम को समस्त को स्वागत। मु आज आमर अतिथि मानकर परिचय एवं स्वागत भाषण पाई आमर स्टेट प्रेसिडेंट देवेश होता डॉक्टर देवेश होता को अनुरोध करी से आसी परिचय करेंगे। नमस्कार जय जगन्नाथ। पंचम कृष्ण चंद्र राय स्मृति व्याख्यानमालार आज मंचासीन एवं सभापतित्व करुथुवा विशिष्ट शिक्षाविद प्राक्तन कुलपति प्रोफेसर क्षितिभूषण दास महोदय, मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस डॉक्टर डीपी चौधरी महोदय, मुख्य वक्ता विशिष्ट राष्ट्रवादी एवं वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त स्वपन दासगुप्ता महोदय, विकासार्थे विद्यार्थी ट्रस्ट वरिष्ठ सदस्य तथा भारतीय स्त्री शक्ति ओडिशा चैप्टर फाउंडर मेंबर कृष्णा आपा, एबीवीपी पूर्वतन संपादक वरिष्ठ सदस्य शिशिर भाई, एबीवीपी पूर्व प्रांत
राज्य संपादक सुश्री दीप्तिमयी प्रतिहारी भौणी एवं मो सम्मुख रे उपस्थित ओडिशा प्रदेश रो बुद्धिजीवी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता एवं सांबादिक बंधुगण जरूरीकालीन परिस्थिति परे 1980 मसीहा बेलू बा 80 दशक ओडिशा रे एबीवीपी रो कार्य को गति देइथिबा व्यक्तित्व होचंती माननीय कृष्ण चंद्र राय महोदय आम प्रिय कृष्ण भाई। ओडिशा प्रदेश रो संगठन मंत्री रूपे कार्य करी सारा ओडिशा रे तांकर प्रवास समय रे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रो प्रतिष्ठान को सारा प्रदेश रे प्रतिष्ठित करने सहित आम भली अगणित कार्यकर्तांकर से थिले मार्गदर्शक। आज होची कृष्ण भाईंकर से पवित्र 75तम जन्म जयंती एवं यही जन्म जयंती रे कृष्ण भाईंकर आवर्तन रे कृष्ण भाई आम मानंकु शिक्षा देइतिबा से कार्य पद्धति एवं तांको ठारू आमे शिखितिबा प्रेरणा एवं समर्पण भाव को पाथेय करी वर्तमान युवपीढ़ी को राष्ट्र पुनर्गठन काम नियोजित करिबा एवं आमको आजिर कार्यक्रम रे यह ही प्रेरणा मिलिबा बोली मोर आशा एवं आजिर कार्यक्रम उद्देश्य मध्य सेया जे कृष्ण भाई को आजिर युवपीढ़ी को जदि राष्ट्र पुनर्गठन काम कृष्ण भाई ठारू शिखिथिबा प्रेरणा पाई जदि आमे किछि करि पारू ताही हबो श्रेष्ठ श्रद्धांजलि। धन्यवाद। कृष्ण भाईंकर श्रुतिचारण पाई मु वर्तमान अनुरोध करी आमर प्राक्तन स्टेट सेक्रेटरी श्रीयुक्त शिशिर कुमार साहू। मंचरे एवं मंच तले बसथिबा आत्मीय स्वजनगण आपण माने समस्ते खूब निजर कृष्ण भाई सहित काम कर सुजोग मिलवा केते सौभाग्यर विषय तो जो माने तांका सहित काम कर जानते। सपन जी आपके लिए मैं हिंदी में नहीं बोलूँगा, उड़िया में बोलूँगा और मुझे ये पता है कि आप समझ जाएंगे। हिंदी में एक कहावत है, गगन संस्कृत रे गोटे कहावत अच्छी, गगन गगनाकारम सागर सागरोपम। जदि आमको पचरा जाए गगनटा केमिति, गगनटा गगन भलिया, आकाशटा आकाश भलिया, आकाशर किसी तुलना नहीं। जदि पचरा जाए सागर समुद्रटा केमती, समुद्रटा समुद्र भलिया, समुद्रटा आ किसी तुलना नहीं। कृष्ण भाई कृष्ण भाईंकर तुलना नहीं। कृष्ण भाई गोटे कथार विश्वास करते, मैं कृष्ण भाईंकर उच्चारण करी। कृष्ण भाई ठारू जहाँ शिखी आज दिन में पचारुची मुझे कथार दृढ़ अच्छी। तो कृष्ण भाई एभली एक व्यक्तित्व थिले जंकर कथनीय करणी समान थिला। से जहाँ कहूले ताहा करुथिले। कृष्ण भाई विचारधारा पर आधारित गोटे विषय वस्तु पर आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करी। इंग्राजी रे गोटे बहुत भल शब्द अच्छे एवं से किसी भल बही भी लिखाई। से शब्दटी है पर्पस माइंडसेट। आज आम समस्ते
निज पचारिबार समय आछि जड़े मनीष भाव में बंचुची जड़े पशु भी बंचुची मु भी बंचुची बहु मनीष बंचुंट मु भी जड़े मनीष हिसाब बंचुची बट मोर पर्पस कौन मोर लक्ष्य कौन मु कौथि बंची राष्ट्र सर्वोपरि कहीदेवा बहुत सहज निजक राष्ट्रवादी कहवा बहुत सहज किसी गोटे लिखिदेवा भी बहुत सहज किसी गोटे कहीदेवा भी बहुत सहज निज सहित केते आमे निजे कथा होचे कृष्ण भाई शिखई थिले आमे समस्ते टिके निज सहित निजे कथा हवा दरकार एबे समय आसी जेतेबेले आम उपर दायित्व अनेक जेतेबेले आम विचारधारा को समग्र पृथ्वी रे जो विचारधारा आम विश्वास करुचु जो विचारधारा कृष्ण भाई ठारू आम शिखीचु जो विचारधारा कृष्ण भाई आमको दीक्षित करैछन्ति से विचारधारा कौन से विचारधारा संपर्क गोटे इंग्राजी गोटे स्टेटमेंट मुझे कहवाई चाहूँगी बुझा चेष्टा करेंगे तार ओडिया भी कहबी से विचारधारा हला लेट्स फील पैशनेट अबाउट अदर्स अन्य मान आवेग रे भरी जीवा बट एट द सेम टाइम लेट फील डिस्पैशनेट अबाउट आवर सेल्फ छोट कथा नुहे अन्य पर पैशनेट फील करिबा और निज को डिस्पैशनेट भाव में देखिबा यह आम विचारधारार सबुठारु बड़ कथा संक्षेप कहिया हेले आम जीवन तो अन्य पाई प्रकृति कौन आम से जीवन बंचीचे ना इंग्राजी रे थिबा ओडिया रे हिंदी रे थिबा सिनेमार डायलॉग सब मन रखिचे मुझे क्या मिलेगा रे कालिया आमे कौन एक कथा कृष्ण भाई ठार शिखीचे कृष्ण भाई केवे पचारि नथिले निजो केवे भाभी नथिले केवे स्वप्न देखी नथिले मुझे क्या मिलेगा रे कालिया यदि आमे कृष्ण भाई स्मृति चारण करुचे कम से कम टिके आज निज को टिके पचारिबा दरकार जे जो कृष्ण भाई स्मृतिचारण आमे करुचे से कृष्ण भाई को विचारधारा बंचुथिले और आमे को विचारधारा बंचुचे ही हैज लिव्ड ए लाइफ विथ पर्पस निर्दिष्ट विचार निर्दिष्ट संकल्प आज अमर करम पाखे मु कहीं कि कृष्ण भाई संपर्क रे मोर व्यक्तिगत जीवन किसी अनुभव को स्मरण करने चाहूनी मु जाने जे मु गोटे भावप्रवण लोक मु भाव प्रवणता को आदो मो पाई बहुत कठिन तेणुक मुझे गोटे विचारधारा संपर्क में आपण पाखे आलोकपात करुच्ची से शब्द टेला लेट्स ट्राई टू लिव ए पर्पस ड्रिवन लाइफ निजे निज सहित कथा बा निजे निज को पचारिबार समय आसी को परिवर्तन आमे चाहूचे को परिवर्तन आमे देखुचे विकसित ओडिशार कथबार्ता आमे करुचे विकसित ओडिशा करिबो किए बरं पचारिबा दरकार लेखिबा पूर्व विकसित ओडिशा 2036 बरं पचारिबा दरकार आज कृष्ण भाई से कथा शिखैछन्ति मु कोन करि पारिबी विकसित ओडिशा 2036 पाई ताही सबुठारु बड़ प्रश्न टिके मुझे क्या मिलेगा कालियार दंशन रु निज को टिके बंचेबा कि पारिबा कृष्ण भाई स्मृतिचारण आमे करुथिले
किछि नथिला तांकर कौन थिला कृष्ण भाईंकर किछि चाहि नथिले से काठारो जीवन शेष पर्याय किभଳି भाव बंची थे जो मैंने देखी जानी थे निज निज को प्रश्न पचारे आरंभ समय आसी कृष्ण भाईंकर 75तम जन्म दिवस मु तो निज निज को प्रश्न पचार कृष्ण भाई आपण दिखाई रास्ता आपण शिखाई शिक्षार विच्युत हैनी तो मु रोकिबे मते आपण विच्युत जदि हो जाए काली बड़ आवश्यकता अच्छी समग्र विश्व आम विचारधारा को आज ग्रहण करुच विचारधारार शक्ति और सामर्थ्य एते अधिक कहीं रोकी पारिबे नहीं भारत को विश्व गुरु हबारे तार कारण होची विचारधारा शत सहस्र जीवन समर्पित विचारधारा पाई जीवन में किछि जो माने किछि चाहि नांती केवल देइचंती देवारे आनंद पाइचंती पाइबारे नुहे पचारिबा आज निजको आमे देवारे आनंद पाउछ ना पाइबारे आनंद पाउछ समय आछि एसो प्रश्न आज पचारिबारे समय आसी कृष्ण भाई जन्म उत्सव बा कृष्ण भाई विषय आज जो आम आलोचना करुचे आम दायद बोली आज जदि आसीचे किसी समय अतिबाहित करने आसुचे चलतु समस्ते पचार 3टी प्रश्न प्रथम प्रश्न मु जाने समय सीमित प्रथम प्रश्न जहाँ कृष्ण भाई जो विचार करुले जहाँ सब बेले सी करुले कहूले कथनी और करणी भितर केते सामंजस्य रखिबा आमे मो कथनी और करणी रे केते सामंजस्य अछि मु जा कहूची आ जा करूची प्रथम प्रश्न मु जा कहूची आ जा करूची सेतरे केते समानता अछि द्वितीय प्रश्न चलतु पचारिया समस्ते मत से अंतर्भुक्त मुझे प्रश्न निजको पचारुची द्वितीय प्रश्न मु भी जड़े मनुष्य भाव में बंचुची किंतु हुए माए मो भिन्नता कौन मोर परिचय कौन मो परिचय मोर ना अच्छी मो परिचय मोर पितामाता अच्छा मो परिचय मोर गोटे पदवी अच्छी मो परिचय अच्छी मो पाखे किसी क्षमता अच्छी यह मोर परिचय परिचय तो प्रकृत परिचय आपण दौचंती कौन व्हाट आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी ताहला हमर आइडेंटिटी ताहला हमर प्रकृत परिचय चलतु पचारिबा से प्रश्न व्हाट आई एम गिविंग बैक मु आज एते बड़ हवा देख रहे एते शत सहस्र लोकंकर अवदान अच्छी प्रतिदान मु दौची कौन तृतीय एवं आज मोर शेष प्रश्न समस्त को मत निजक भी विकसित ओडिशा पाई स्लोगान देले हब नाही विकसित ओडिशा पाई योजना कले हब नाही विकसित ओडिशा पाई अर्थ जोगाड़ कले भी हब नाही विकसित ओडिशा सेतिक बेले हब जेतबेले आमे समस्ते निजे निज को प्रश्न पचारिबानी केवल उत्तर खोजिबा ओडिशा को विकसित देखिबा पाई मु कौन करिबी मु कौन करुची चलतु पचारिबा ताले कृष्ण भाईंकर स्मृतिचारणर विश्वास करुची धन्यवाद समस्त धन्यवाद शिशिर भाई कृष्ण भाई श्रुतिचारण आपण कृष्ण भाई परिचय जो प्रदान कले आज आम समस्ते जो एकाठी होचे एवं जहाँ को आम शुणा
व्यग्र अच्छे महान स्तंभकार लेखक चिंतानायक राष्ट्रवादी चिंतानायक आमे पद्मभूषण श्री स्वपन दासगुप्ता को शुणापी समस्ते आसीचे एवं स्वपन दा को आमे समस्ते आगुरी टीवी रे मध्य बहुत बार कहबार शुणीचे इठी आसबार किसी समय पूर्व मुझे पचारि जे आप आजिकल टीवी रे तेणु सी से टीवी रे जो कोलाहल और जो प्रकार हाई पिच रे चलुची से आम भाया लॉजिक काम करूना तेणु निजको किसी समय पे मु दूरे देछि किंतु आज यही सभारे सौभाग्य प्राप्त करिछु मु तांको अनुरोध करी जे कृष्ण भाई को श्रुति सभारे तांकर भाषण से रखिबे। नमस्कार। आज का अनुष्ठान का चीफ गेस्ट जस्टिस डीपी चौधरी, हमको कोई कह रहे थे उनको ही इज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ही इज अ रिटायर्ड जस्टिस। लुकिंग एट हिम आई कैन नॉट बिलीव दैट, आई थॉट ही वाज स्टिल सर्विंग। मंच पे उपस्थित डॉक्टर खितिभूषण दास, शिशिर भाई एंड अदर्स, और ऑडियंस में मैं बहुत सा परिचित मुख देख रहा हूं, जैसा समीर मोहंती जी को, सुदीप्तो रॉय जिसको साथ हम 5 दिन 2009 में अडवाणी जी का रथ में हम दोनों साथ में थे, और भुवनेश्वर का सेलिब्रेटेड डिस्टिंग्विश्ड सिटीजन्स। मेरा भाषण थोड़ा अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके होगा। आई वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल इन बांग्ला, बट ठीक है, I'll mix it up. At one level, this is not merely a gathering. This is also a reunion. This is a reunion of various people who came into contact with Krishna Kumar Ray ji when they were young. This is the important point I want to make, that probably every one of you came into contact with him when you were at that impressionable age, when you were young, when you were full of life, ऐसा उस time पे. Today, some of you have reached retirement age. Some of you are still in the peak of your careers. Some of you are still making it in a career. But all of you have come here because this gentleman inspired you to such an extent. No one forced you to come. You're not going to get an assembly ticket by coming here. But it shows that a man who can inspire, and that inspiration is a very difficult one. He was a guru to everyone in different ways. It is not that he was a great political thinker. But what was important is that he stood for certain values, that he epitomized a certain moral character, and those he sought to transmit to the rest of society. Now, I cannot think of anything, a bigger project than this. Shishir ji spoke about the time when Vikashit Odisha will come into being. When
इसका जब इतिहास लिखा जाएंगे, the names of a lot of people will be there. Some are big political leaders. I can think of Biju Babu. I can think of Hare Krishna Matab. I can even think of Naveen Babu. These are people who made big contributions in their way. But they will also have a very important place for people like Krishna ji, who built the moral backbone of this state. And I think that is something very, very important and we need to recognize. So, I am privileged that you have invited me to such an important gathering to pay homage to such an important personality of Odisha. I have been asked to speak on the topic of nationalism in a new India. I think I am speaking to a gathering. सभी लोग को जो अगर पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ मैं राष्ट्रवादी हूँ. I think 99%, there may be the odd 1% out, but 99% will say we are, हम लोग committed राष्ट्रवादी शक्ति में हैं. The question is, the राष्ट्रवादी आदर्श, which I, for example, learnt when I was a college student, is very different from the ideals which a college student of today imbibes. And this, whatever I learnt, was also very different from what my father learned. And my grandfather, who was a committed Swadeshi, he wore nothing but khadi for all his life. So, what is the difference? And I would like to say, when we talk about Rashtravad, of course, we have a commitment ki ye nation first. That is the basic foundation of Rashtravad. और राष्ट्रवाद का expression has changed over the years. Under British rule, Rashtravad was a symbol of defiance, of virodhita. There was a time when people used to say, पहले अंग्रेज लोगों बोलते थे कि भाई there is nothing called India. Winston Churchill बोला था कि to talk of India as a nation is like saying the equator is a nation. It used to be said we are a different sort of people, इधर उधर का लोग हैं, एक कन्वीनियंस में ज्योग्राफी में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया कह दिया. And that each one at best could never think of anything beyond their local. But India एक था, भारतवर्ष, लोगों के मन में there is a भारतवर्ष. A भारतवर्ष was sometimes described कि वो शंकराचार्य का रूट सारा इंडिया में, चार कोने पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. That was one way of putting it, that he had an idea of what it was. कोई शक्तिपीठ जहां जहां पड़े थे. It's interesting. शक्तिपीठ का सबसे वेस्टर्न जो पीठ है वो बलूचिस्तान में है,
हिंगराज में, और ईस्टर्न जो सबसे है वो समवेयर नियर चिटागोंग, बांग्लादेश के बॉर्डर में। इन अदर वर्ड्स, भारतवर्ष का जो पूरा मानचित्र है, इट मोरलेस कॉरेस्पॉन्डेड टू दैट। द आइडिया ऑफ भारतवर्ष वाज ऑलवेज देयर। हम बंगाल से है, हम लोग को पास सबसे बड़ा 3 या 4 तीर्थ स्थान, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। नंबर 1 है, आप लोग जानते हैं, पूरी जगन्नाथ। नंबर 1, वो तो बंगाल के लिए तो इट इज लाइक होम। यू कैन क्रिएट replicas somewhere else, but वो तो it is not the same. काशी, कामाख्या और देवघर, these were the big ones. और जो लोग बड़ा तीर्थ करने जा रहे हैं, they used to go to रामेश्वरम, they used to go to बद्रीनाथ, केदारनाथ. So this I am giving an example of from the perspective of Bengal. So there was always a Bharatvarsh in people's imagination. बंगाल का जो यूनिक कंट्रीब्यूशन था कि 1878 ऑलमोस्ट 1880s में बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखा, और वंदे मातरम का सिग्निफिकेंस जो है कि भारतवर्ष एज मदर इंडिया, इसका बाद में लोगों ने उसका एक चित्र तैयार किया। अवनींद्रनाथ टैगोर एक भारत माता का पेंटिंग किया पहले, उसके बाद डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट एज शक्ति केम अबाउट। पीछे मैप ऑफ इंडिया, सामने शक्ति। तो भारत, बट इट इज टू बी रिमेंबर्ड वन थिंग कि मदर भारतवर्ष का जो हम लोग जो भारत माता कहते हैं, दैट इज एसेंशियली अ 20th century थिंग। भारतवर्ष इज मच अर्लियर इन द इमेजिनेशन, एंड दिस वाज, एंड व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट द 20th century भारतवर्ष वाज दैट जब हम लोग अंग्रेज के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष था, यू हैड एन आइडियल, यू हैड एन आइडियल। लोगों का, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं सब लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा, इसके मतलब नहीं है कि देर आर नो अदर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप, बट मूर्ति पूजा इज ए बिग। तो फॉर अस भारत माता बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग जब नेशनलिज्म बिफोर इंडिपेंडेंस जब कहते थे, नेशनलिज्म वॉज ऑलवेज अ फीचर ऑफ trying to get independence, recovering our sovereignty. हमारा जो स्वाधीनता ऑलमोस्ट 11th century तक के बाद, ऑलमोस्ट 800-900 years of पराधीन existence, we wanted to overcome that. So that was the importance of what nationalism meant at that time. Now come to independence. इंडिपेंडेंस में हम लोग पहले सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा धक्का हम लोग को लगा कि पार्टीशन, सबसे बड़ा धक्का। भारत का 2 अंग सेपरेट हो गया था। मोर देन दैट, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड नेशनलिज्म was that we had to confront an era which was really what might be called an era of permanent shortages. लोग कहते थे कि we lead a ship to mouth existence. अमेरिका से wheat आते थे, it was sent off to the ration shops, and that was our existence. There was an American ambassador, I think it was Daniel Patrick Moynihan,
who, when he was leaving India after serving as ambassador, he was asked, "Ki, sir, what are your memories of India?" He said, "I am very happy to be leaving a country whose main export is communicable diseases." So that was the impression of India. So what Rashtrabad at that time meant was that you kept up your faith in India. You believed that India was more than a geographical expression. You believed that India had a mission. And you believed that India had a huge inheritance. हमारा जो बांग्ला बोले ऐतिह्य, I don't know what is the exact word. So I think more or less the same thing, ऐतिह्य. हमारा संस्कार, ऐतिह्य, everything, we had to maintain that. At that time, the communists said, no. You see, India is a republic. Yes, we are held together by the Constitution. Constitution is a very important, Samvidhan is a very important document. But a constitution, to say that the Constitution is the first and last word of India, suggests that before 1950, there was no India, and that everything, that Constitution is the year zero. 1950 is the year zero. That is the meaning of that. I would say Constitution is a very important political document. It tells us how public life is to be conducted. It tells us how revenues are to be shared between states and center. It tells us which powers are with the center, which rules of the game. वो cricket में एक होता था ना, laws of cricket. Similarly, laws of public life are defined in the Indian Constitution. And it is a document which we must place a lot of importance to. But this was this whole thing. So the first 50 years of independence was a very defensive battle we fought. We were fighting always. एक जमाना we were somehow apologetic. We had to tell people, नहीं, हम लोग हैं, हमारा कुछ है, इंडिया में कुछ है. And that was the thing. इसका कारण था कि we were always overcome by material shortages. People said, ये तो land में तो famine होता है. When I was growing up, the famine was a very big thing. 1966 में बिहार में एक famine हुआ था. उड़ीसा का कलाहंडी district was always noted कि भाई ये यहाँ तो लोग they are always dying. Today Kalahandi is a different image altogether. But that was the image. Bihar, Odisha, Jharkhand, Bengal, this was poverty and everything. वो जो विदेश में एक type of posters होता था कि please donate some money Christmas time में. Starving children with one. That was in India at that time. It has taken us a lot of things to come out. Today, we are a very different India. That era of shortages is over. And because that era of shortages is over, some people have come to the conclusion that it means that there is no such thing as India. We are now post-national. This is all those who study any of the history or political science or anything in the universities today will be given a lot of stuff to tell people that we are a post-national country. They will cite the example of the European Union and say, देखो, Europe, they have dissolved all their little histories
and have incorporated themselves into a larger thing. This is what they feel that India should also become. We should become a federation, confederation with Pakistan, with Bangladesh, maybe even with China, who knows. So the nation is not very important, nation is just a convenience. And sometimes it is an inconvenience. That was the idea which was there put. And it happened also at a time when we moved away from a closed economy to becoming a part of the world. Now, a lot of people say, "Bhai, this is not part of Bharatiya Samskriti, Bharatiya Parampara." To them, I say, कि भाई, just look at Odisha. Look at the carvings in Konarak. Just look at them. Bali Yatra is Odisha. When people say Kartik Purnima, we know. Because this is that the life of Odisha depended on global trade. Always, traditionally. And this is true for parts of Gujarat also. This is true for certain parts of Bengal also. Certain parts. Why did the British come to India initially? Not because they just wanted some land, but because India was one of the richest countries, which had 20% of the global GDP. It is estimated. And what was it? Because we were a prosperous society, we sold our goods all over the world. Bengal cotton, आज जो उड़ीसा का जो टेक्सटाइल्स का जो फेम है, it all dates back to that. So, anybody who says that when we look outwards and India's markets are somewhere else is somehow betraying the idea of India, it is wrong. We were always a country which looked outwards, and that we have rediscovered that. Today, once again, we are in the cusp of globalization. इसके मतलब ये नहीं है कि we abandon all our distinctive features. It does not mean that we suddenly become global citizens and forget we are first an Indian citizen. Yes, we are always a global citizen. People will quote Rabindranath Tagore. But Rabindranath Tagore was above all an Indian citizen. He had a global outlook. He allowed the generosity of ideas. So the issue of nationalism here becomes very, very important. What do we accept? What do we reject? This is the basic choice which is being presented to us at every stage, and most of the debates in India, Bharat में, are about this. लोग कहते हैं कि जब मोदी जी ने बोला कि अब से हम लोग भारत बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. It was always in the constitution. Constitution में था, but उसका usage कम था. India was more important. People of my generation, we still struggle because our natural thing is we've heard India for so long. When we talk in Bangla, we say Bharatvarsha. When we talk in Angrezi, we say India. It's like when I speak in Bangla, I say Kolkata. When I speak in English, I say Calcutta. It's a bit like that. Nothing more than that. Nothing more significant than that. So, the idea that हम लोग का जो एक अलग, we have an importance which is both global and national. This had to be implanted. And what is very good in this is that we have decided, and quite rightly so, that we don't have to be defensive about the fact that we are Hindus.
We don't have to be defensive about the fact that we have a culture of our own. Sometimes that culture becomes a global culture. I'll give you an example. The most clearest example, cricket. Now, cricket is no doubt a game which was invented by Angrez. But today, it is a game which is invented by the Angrez but is owned by Indians. The economy of cricket belongs. You will never, when there are these one-day tournaments and tournaments, etc., you will always find that whenever वो कोई शनिवार या रविवार का इवनिंग में होगा जब प्राइम टाइम the TV audiences are the best. Why? Because they know that the money, the advertising, the audience, everything comes from India. So the entire weight of the Indian market is now there. Agar now, if someone says we should be ashamed to be Indians, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. When I grew up, that time if we won one test match, it was a cause for massive celebration because most of the time we lost. We were afraid of playing fast bowling. जब वेस्ट इंडीज का बॉलर्स होता था, Samir ji is nodding his head, so he knows exactly what I'm talking. There was a time when the West Indian bowlers, and we used to be afraid. Even as an audience, we used to be, spectators, we used to be afraid. So things have moved. If you look at what is available today, what we consume today, it is global in character. So the challenges which we face as Indians in today's world is very, very different. So does that mean that Rashtravad should be put into the archives? It should be said that this belonged to the past. एक previous generation का था, हमारा लिए दूसरा कुछ. There are people who say that. They are post-national, as I keep telling you. I believe that India has two destinies. One is, when Modi ji said India has a duty to be the Vishwa Guru, he didn't mean necessarily that India must conquer the world. We are not conquerors. हम लोग, हमारा आदत में नहीं है. We are not people who take over other people's lands and impose our wish on everyone else. But what he did mean was that we have a certain lifestyle, we have a certain philosophy which the world will benefit from considering, nothing else, from considering. We have a more sustainable lifestyle. We don't waste that much. Hamara wastage is the least. Lot of the multinational corporations, when they came in here at one time, they got their assessments all wrong. क्योंकि they thought कि भाई एक refrigerator उसका लाइफ स्पैन होगा 7 साल. भाई 7 साल में probably in one shot, but उसके बाद 7 साल के बाद it will go from one big city to a small city. It will still work. Finally it will find itself as something else. उसका पूरा retrofitting हो जाएगा. एक गाड़ी का the lifespan of a car in India कितना साल? 30 साल हो जाता, 35 साल. Everything, we don't throw anything away. The wastage economy is not there. Our approach to life is fundamentally very, very different. We still value the family. And I think this is a very important thing which I must stress.
What marks India is the fact that we value the family. आप देखिए भारतवर्ष के जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉरपोरेट जायंट्स, ये वो एटसेट्रा, all of them, what is their instrument, what is the main unit through which they operate and grow? It's the family. When the family starts breaking down, the corporation also has a crisis. And we've seen that in many places. All of us who look at a little bit into share investments and all, whenever we see a family feud, we sort of say time to get out of that. Because the family is very important. Because secondly, we also think that while an individual is very important, the individual is not as important as the community, the family, and ultimately the nation. These are values which we learned, which we were taught by our grandfathers and our great-grandfathers. And these are values which are permanent, abiding, and they stay with us even when we move to a global stage. There is always a great deal of fascination overseas, and I keep going overseas for various things. कि भाई ये तुम्हारा इंडियन लोग है ना, दे आर वेरी क्लैनिश, लोग कहते हैं दे आर वेरी क्लैनिश. अच्छा ठीक है, यू कैन से दे आर वेरी क्लैनिश इन सो फार एज कि भाई दे ऑल स्टिक टुगेदर, देयर खाना इज अ लिटिल डिफरेंट. हाँ, they like their own food and don't like the other thing. But what they basically mean is that they help each other. This is the important thing. That sense of camaraderie, that sense of community, which is very much there. The Jews have it. You'll find this in the Jewish communities. And you'll find this in Indians. Which is why when people say that you have this strange affinity towards Jews, I said, it's more than, it's not about realpolitik, it is not merely about strategic alliances, etc. It's also because there is a certain degree which we identify with. Their lifestyles, their pattern of looking at it, we identify with. So then we come to this larger question of how do we conduct ourselves in the world. Today, for example, we find ourselves in India, एक थोड़ा गैस का, कुकिंग गैस का एक शॉर्टेज होने वाला है, पूरा हुआ नहीं अभी, होने वाला है. इसके कारण because supplies from the Middle East have potentially can be disrupted. ईरान में जो conflict हो रहा है. Now, some people say कि भाई चलो पूरा अपना शक्ति किसी one power को साथ identify कर लो. I mean, just like some people were pro-Russian at one time, now they say, be pro-American in another way. In other words, chalo, we become a second level, third level playing field. Our intention is not that. When we talk about what we call strategic autonomy, which we put out, just say what is best for us. We took on the world on the question of the Russian oil. It is not that Russian oil had a certain special quality about it. It was slightly cheaper than most others. We said because if we import the Russian oil, number one, we will be benefiting our consumers, which is significant. Secondly, we are not dependent on only one supplier. So we have created a foreign policy. Our outlook is based on the fact that we will do all we can for the benefit of India, भारतवर्ष के लिए और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए. And this is where the change has taken place. It is no longer a battle for independence. It is no longer a battle for survival. It is today a battle to become the most important power in the world. That
is the shift which has taken place. The new India which we are talking about is an India which is self-confident. उसका आत्मविश्वास जो है ना, amazing. वो क्रिकेट फील्ड में थोड़ा बहुत उसका देखते हैं. That sense of, we can do it. ठीक है, अभी भी बहुत बाकी है. We've just about begun the journey. Now we need people like organizations like the ABVP. What their main function is to instill that sense of self-confidence. You have to learn from the world, but overall keep your roots there. जमीन पे पैर रख के आप सामने बढ़िए. This is what the change has been. So nationalism, Rashtravad has not become irrelevant. Nationalism, Rashtravad still matters. But हम लोग का प्रायोरिटी बदल गया. और ये प्रायोरिटी आप लोग का, we must recognize that we are not ever static. राजनीति में भी दीनदयाल जी जो बोला था और मोदी जी जो बोल रहे हैं उसमें एक फर्क है. Deen Dayal ji was talking in a time when it was an India of shortages. Modi ji is talking about an India which is bursting with energy, raring to go, and thinks we've just about begun. And I want you to remember that when the next time when people tell you that nationalism has no place in India, this is time for a post-national order, that globalization means that we must give up our Bharatiya Parampara, our Bharatiya Parichay, and more or less dissolve ourselves in some amorphous mass. That would be betrayal of India. बहुत बहुत धन्यवाद. हम थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद शोभना. मु वर्तमान अनुरोध करी आज मुख्य अतिथि जस्टिस डॉक्टर टीपी चौधरी को से अभिभाषण रखें. Good evening to all. Esteemed Chief Speaker, versatile speaker and journalist, Mr. Sopan Das Gupta, the President of the meeting, Dr. Kiti Bhushan Das, and the keynote given by Sri Shishir Shao on Sri Krushna Chandra, for whom we are actually gathered here to express our opinion, and the other dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, print and electronic media. After hearing the speech of Chief Speaker, I have nothing to add, but one thing I can say, he has talked about the values. The values are required everywhere, be it global or national. The values for which this India has come up, Bharat has come up. What kind of values? The values Krushna Chandra has possessed, for whom we have remembered today also, and also tomorrow also we will remember. That value is that human value.
that values, that 5 core values basing on which your constitution, as Mr. Dasgupta was mentioning about the pre-independence or pre-constitutionalism and post-constitutionalism. The fact remains that whenever the freedom fighters were thinking about the new India at that time, but now not new India, I am telling that India, they were thinking about the how to at least create a nationalism in every body's heart. And that nationalism has taken us to a new look. And that is why the debate is going on for years together. And took 2 years to bring one constitution, which is a living document. And every now and then, the PM is also speaking that constitution is the best document without which you cannot stay. That's correct. Because every nation can only exist based on the constitution. The constitution core values by that, 5 core values. The first and foremost is Swaraj. That Swaraj is nothing but to create yourself, self-introspection. As he has said correctly, that which everybody should feel that I have to do something for the society, I have to do something for the country, I have to do something for the humanity. That Swaraj, which was instilled within everybody, but that should be exposed. Then only you can understand what is Swaraj. And that Swaraj is one of the prime core value of our constitution. And that Swaraj was also told by Lord Krishna to Arjun in Gita. And you know that Krushna Chandra, the person for whom we are also gathered, is also, we can say, maybe one follower of Lord Krishna. That is why he is known as Krishna. And that humanity, that Swaraj, is that called the nationalism, national interest. So one has to understand that unless there is nationalism, there cannot be independent India. Number 2, truth. The Indians always believe in truth. Without truth, nobody can survive. You see, go to Mahabharata. You can find out that truth has prevailed everywhere. And entire Mahabharata is created when there lies some sort of untruth. Therefore, the truth is basic, fundamental to create any sort of document for any country. And third one is non-violence. Yes, without violence, nothing can come out. जब बच्चे कुछ चाहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? जैसे कृष्ण जी ने आपको कहीं कहीं से जाके लाते थे, कुछ बटर वगैरह चोरी कर लाते थे और उसको झूठ बोलते थे. मगर ये बात नहीं है. बात है कि actually the real, without any causing in violence, we have already gone this independence. No, it is not. There is a violence, but that violence different type. Not that today's violence is something creating terrorism, etc., etc., etc. This is not that. And fourth one is the Sarvodaya. सबका विकास होना चाहिए. So first of all, if a development for all we think, then that is called nationalism. Today's topic is nationalism. I was thinking why this topic is kept today. The topic is kept keeping in mind what has been brewing in the mind of the Indian in 1950 or 1947. And this Antodaya, rightly Mr. Das
Gupta was mentioning economy. You see, world is burning now, but still, we the people, we the Indian, are still in so much self-hand. Why? Because we are thinking about values, and their value is about the food, shelter, everything. We have got minimum. Roti, kapda, makan. That's is with us. At least we can survive for some time, even if there is any sort of disturbance in the world entirely going on. Why? Because we have got that value within ourselves. So, ladies and gentlemen, I'll only say that nationalism is that where these core values of the Constitution are still, you can feel. And rightly Mr. Dasgupta said about one factor, that family. The family which we have already got in long years back, now we have to revive. Otherwise, the days are coming when the children will not recognize their parents. So question arises, the nationalism will be there and was there, and nationalism is not the taking away the global idea. You see, when we call it nationalism, we take it that we are the Indians and we always remain as Indians. And nobody can take away our identity. Lord Jagannath is there, as Mr. Dasgupta mentioning. And we are actually known for Lord Jagannath for the reason that He is the Almighty who has inspired us in every self-introspection, in the sense that पहले खुद देखो अपने को, दूसरा बात देन दूसरा देखना चाहिए. इसका मतलब है you have to inspire yourself and inspire others, as Mr. Sahu was telling from the beginning, which is the quality of Krushna Chandra. So question is that whenever we are thinking about the values of India, these core values must be remembered, basing on which entire articles of the Constitution have been framed. And gentlemen, ladies, and these are all called also humanity. Unless you inculcate the humanity within yourself, unless you think yourself that I can do something for others, I can build myself and also the for nation also, which are actually dreams of the various people who have brought the India to a new existence, that then without that we cannot survive. Therefore, the constitutional mandate, constitutional regime, constitutional value should be inculcated within the heart of every person. And that was there with Krushna Chandra also at that time. Still also many things to be done, but I am only confident that the present era of India will definitely give the idea to entire global ideas, will lead the global market also, because we believe within ourselves, we believe within our image and also with spirit. Gentlemen, ladies, the speech which has been given on nationalism, I can say that this nationalism is nothing but the self-introspection within yourself and to do certain things as a human being. In the sense, good human being can have a good value within himself. Yes, now there are certain disturbances created in the society, but remember that if you
remember the words of the Swami Vivekananda, and also great culture persons, then definitely we can remain as a good humanity and with human touch. Then only can create a new India. New India nothing but a inspiration to create this entire image of this country. I don't want to speak more, but one thing that nationalism is nothing but the great philosophy behind the Constitution, a living document in India. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhary, for your kind words. Now, may I request our chief guest and chief speaker, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସପନା ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ एंड ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଏଠିକି ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ ମାନିବାକୁ ପାଠ କରୁଛି ଆଶା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ कृष्ण भाईंकर भाणीजी उपस्थित अच्छा ये प्रथम तो सी जितेबले मुख्य वक्ता मुख्य अतिथि आसी मु देखी से चारे आप्यायित करते से जानी नी मुझे मंच उपर देखिक पचारि आप कृष्ण भाईंकर भाणीजी धन्यवाद आपण मैंने आसी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ तम पुतरा आसन मंच उपरक आसन 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 भाईपर परिवार सदस्य मैंने
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏକ ଔପଚାରିକତା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ आज श्रुति सभार मुख्य वक्ता पद्मभूषण श्री स्वपन दासगुप्ता जी, मुख्य अतिथि जस्टिस डॉक्टर दुर्गा प्रसन्न चौधरी जी, विद्यार्थी परिषद स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर देवेश होता, स्टेट सेक्रेटरी दीप्ति, शिशिर भाई, कृष्णा अग्रवाल, मंच सामने मो सामने बसी मान्यगण्य व्यक्ति, कृष्ण भाई परिवार सदस्यगण, मो सामने बसी अनेक कार्यकर्ता कृष्ण भाई द्वारा अनुप्राणित आज से अच्छा प्रशांत भाई। हेलो प्रशांत भाई, आपण डॉक्टर प्रशांत राउत आपण एत बड़ माइक रे मध्य कहुचे टी माने तो कृष्ण भाई श्रुति सभारे आसीथिबा अनेक शुभेच्छु एवं तांको द्वारा अनुप्राणित होइथिबा कार्यकर्ता जो माने सबु क्षेत्र रे आज प्रतिष्ठित शिक्षा क्षेत्र रे हो, न्याय क्षेत्र रे हो, वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे हो, राजनैतिक क्षेत्र रे हो, सामाजिक क्षेत्र रे हो, जो सबु क्षेत्र रे आज समाने समस्त प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं सेमाने समस्ते कृष्ण भाई द्वारा अनुप्राणित होइछंती। तो आज कृष्ण भाई विषय रे बहुत कथा आमे शुणिले। आजिर मते लगुची ये एक समुचित उचित बेली कहिबे नहीं, समुचित एक सम्मान प्रदान हैला जे आमे एभली जने वक्ता को पाइले जे कृष्ण भाई जो आइडियोलॉजी जहाँ को नहीं कृष्ण भाई सारा जीवन तांकर त्याग एक तपस्वी जीवन यापन करथिले। एवं दादा जस्ट आई शैल टेल यू वन थिंग स्वपन, जस्ट आई रिमेंबर वन ईयर ऑफ बुक्स अवेकनिंग भारत माता, the political belief of Indian right. That is the book probably you have written long back. So you just talked about the cultural and the spiritual nationalism along with the political nationalism. ये जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कथा कहिले, ये जो राजनैतिक राष्ट्रवाद बहुत ऊपरे ये जो सांस्कृतिक एवं जो आमर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद जत ये आमको आज मने पकई दौची आमर प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो पंच प्रण अच्छी विरासत पर गर्व करना। तो ये जिनस को वर्तमान जितेबाला आमे पुणी आउ थे पुनरुद्धार करुचे भारतीय ज्ञान परंपरा को निजर कोर्स करिकुलम रे पढ़ाइवाई निश्चित भाव ये एक भल आजिर गोटे एक सम्मान सहित आज कृष्ण भाई को श्रद्धांजलि है। गोटे व्यक्ति निर्माण कथा जितेबाला कहुच्छे विद्यार्थी परिषद रे व्यक्ति निर्माण समाज निर्माण और समाज निर्माण राष्ट्र निर्माण जो थिरे आमे सबु कार्यकर्ता अनुप्राणित से जो कार्यकर्ता गठन रे कार्यकर्ता को तैयारी करिवार जो प्रेरणा से मध्य आपण पुणी से जगह को आउ थे नहीं आसिले आम मानू जे आज दिन में जो भाव जो इंटरप्रिटेशन तैयारी करा होउची जो टूल किट यूज करा होउची समस्ते जो भाई भाव इंटेलेक्चुअल्स मानकर जो भाई इंटरप्रिटेशन होइची जो परसेप्शन चेंज करा होउची से के परिप्रेक्षी रे आपणकर भाषण आज निश्चित भाव में बहुत प्रेरणादायक थिला। एवं कृष्ण भाई के प्रति मोर बंधु आज मुख्य अतिथि जस्टिस चौधरी मध्य से विषय ही कहले ह्यूमानिटेरियनिज्म भी कथा कहले एवं सी मध्य भी एंडोर्स कले आज स्वपन दांकर भाषण को एवं आपण मान समस्त को मध्य धन्यवाद एठिक आसी धन्यवाद समस्त। मो वर्तमान धन्यवाद भाषण देवाई आमर राज्य संपादिका दीप्ति को अनुरोध करुछु। समस्त को निवेदन करी कार्यक्रम औपचारिक भाव में समाप्त होई नहीं, समस्ते निज निज आसन ग्रहण करेंगे।
परम पूजनीय भारत माता युव प्रेरणार स्रोत स्वामी विवेकानंद मंचासीन जो आज स्मृति व्याख्यान मालार उद्देश्य जहाँ आज ये कार्यक्रम स्वर्गत कुमार कृष्ण चंद्र राय भाईंकर पदारविंदे कोटि प्रणति ज्ञापन करुचु। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ओडिशा प्रांतर पूर्वतन प्रांत संगठन संपादक कुमार कृष्ण चंद्र राय महोदय पंचम स्मृति व्याख्यान मालार यह कार्यक्रम में जोगदे मंचरे मुख्य अतिथि भाव में जस्टिस डॉक्टर डीपी चौधरी महोदय न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय पूर्वतन महोदय को विकसाते विद्यार्थी ट्रस्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पक्षर हार्दिक आंतरिकतार धन्यवाद ज्ञापन करुचु। मुख्य वक्ता भाव में प्रख्यात राष्ट्रवादी सांबादिक तथा पूर्वतन राज्यसभा सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता महोदय उपस्थित रही नवभारत रे राष्ट्रवादर भूमिका उपरे निजर बहुमूल्य अभिभाषण रखी आम भली अनेक युववर्ग को प्रेरणा प्रदान करथबारु आंतरिकतार धन्यवाद ज्ञापन करुछु। तो सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड प्राक्तन कुलपति डॉक्टर क्षितिभूषण दास सर आम सहित उपस्थित रही ए कार्यक्रम को सुपरिचालना करथिले। तो सहित निजर विषय मध्य श्री कृष्ण भाईंकर जीवन बोध एवं ता सहित उभय वक्ता एवं मुख्य अतिथिंकर विषय उपरे सारांश रखिथबारु हार्दिक धन्यवाद अर्पण करुछु। विद्यार्थी परिषद ओडिशार पूर्वतन राज्य संपादक श्री शिशिर कुमार साहू महोदय मध्य स्मृति भाई मंचरे कृष्ण भाईंकर स्मृतिचारण करी नूतन पीढ़ी को स्वबोध दिगरे जो दिशा प्रदान करिसेंती तांको मध्य आंतरिकतार धन्यवाद अर्पण करुछु। विकसाते विद्यार्थी ट्रस्टर कोषाध्यक्षा श्रीमती कृष्णा अग्रवाल महोदय मध्य ए कार्यक्रम को परिचालना करथिबारु अपांको मध्य हार्दिक धन्यवाद अर्पण करुछु। विद्यार्थी परिषद ओडिशा पूर्व प्रांतर राज्य सभापति डॉक्टर देवेशंकर होता सर मध्य आम सहित उपस्थित थिले। तो सहित आम सहित उपस्थित समस्त गणमाध्यम बंधुगण पुरातन एवं वर्तमान कार्यकर्ता बंधुगण शुभेच्छु कार्यकर्ता एवं विचार परिवार समस्त कार्यकर्ता मानक विकसार्थ विद्यार्थी ट्रस्ट एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तरफ हार्दिक धन्यवाद अर्पण करुचु। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। समस्त को अनुरोध वंदे मातरम निज निज स्थान रे छिड़ाई जावा। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजाए द्रुत कर करवाले अबला की नमाए तो बले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल मारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति তোমারই প্রতিমা
गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूस्मितां धरणी भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय।